My dear students, welcome to my class. You are newcomers to plus 2 and the subject you will be taught in this class is history. The name of the paper is The History of the World, and in the previous class you have already covered history and its relevance, the Egyptian civilization. And now, in today's class, our topic of discussion will be another civilization. Before going to start with that civilization, what is otherwise called as Mesopotamian civilization, let me give my own introduction. I am Dr. Soma. I belong to the Faculty of History. The topic which I am going to teach you in this class is Mesopotamian civilization. The very name shows that the civilization grew in a place called Mesopotamia. This is the map of Mesopotamia, ancient Mesopotamia. Dear students, before going to start with the ancient Mesopotamian civilization, let me tell you that the first civilization that you have already covered is Egyptian civilization. Then you can ask me question that what was the condition of the world before Egyptian civilization? Was there not any human being, presence of human being before Egyptian civilization? The answer is no. No, in the sense before Egyptian civilization there was also the presence of human beings in the world, and that phase is called the prehistoric phase. We can divide the past into two phases, the prehistory, the protohistory, प्रागैतिहासिक युग, प्रत्न ऐतिहासिक युग. What is the difference between two? The difference between two is this: prehistoric age, which includes the old stone age, new stone age, chalcolithic age, metal age, iron age, etc., etc. You have already covered. तमे जदि स्कूल रे पढ़ी थिबो जे प्रागैतिहासिक युग कहिले आमे विभिन्न प्रकार प्रस्तर युग को बुझाऊ. प्राचीन प्रस्तर युग, नूतन प्रस्तर युग, ताम्र युग, धातु युग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन प्री हिस्ट्री? कहीं कि आमे एटा को प्रागैतिहासिक युग भितरे अंतर्भुक्त करिबा एवं ता परवर्ती समय को आमे करूछु प्रत्न ऐतिहासिक युग और proto history. The difference is this, that when the human beings they started they knew the art of writing, that is called proto history. जेबे ठारू सभ्यतारे लिखन प्रणाली आरंभ हैला, आमर प्राचीन पूर्वपुरुष माने जेतेबेले लेखन प्रणाली आविष्कार कले, उद्भावन कले, सेही समयरु आरंभ हैला तमर कोन ना प्रत्न ऐतिहासिक युग. And it will not be out of context to mention that when you are reading about the Egyptian civilization, you must have come across the word hieroglyphy. तमको जेतेबेले नील नदी सभ्यता कथा आमे प्रथम जेतेबेले प्रत्न ऐतिहासिक युगर प्रथम अध्यायटी आमे जेतेबेले खोली दउची इतिहास बही रे सेटा हैला नील नदी सभ्यता बा मिशरीय सभ्यता. तमे मते प्रश्न पचारिबा आमे आगे कहीं कि मेसोपोटामिया न पढ़ी मिशरीय सभ्यता पढ़ुचु. द रीजन इज दिस दैट मिसर और इजिप्ट जार इंग्राजी ना हला इजिप्ट, आमे ओडिया रे कहू मिसर. इट डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल. Also it is called as the Nile Valley civilization. नील नदी सभ्यता से माने प्रथम थर करी they invented the system of writing what is known as hieroglyphy, पवित्र लिपि. You have covered about that. तेणु जेबे ठारू आमर आदिम पूर्वज माने लेखन प्रणाली उद्भावन करथिले सेटा ठारू आरंभ होछि प्रत्न ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्ट्री एज. इन प्री हिस्ट्री एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग हैड नॉट कम इनटू एक्जिस्टेंस. सो वर्ल्ड हिस्ट्री, what you are going to cover in
first year class, it starts the relevance of history, what is the necessity of history, reading history in the 21st century, you have already covered. Then you started the first civilization of the world, that is the Nile Valley civilization. And as you know that Nile Valley civilization, it developed in the continent of Africa. Egypt বা মিশর কোন মহাদেশে অবস্থিত, it is situated in the continent of Africa. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ନ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଫ୍ରିକାର ମିଶର ଦେଶରୁ. Then we come to the second civilization of the ancient world. It started in Asia and mainly in the Southwest Asia, that is called as Mesopotamia. You see the map and here you find out three things: Assyria, Babylonia, Sumer. You will cover about these three civilizations in our course of discussion. Jawaharlal Nehru, who is not only a great prime minister but also a prolific historian, he in his book Glimpses of World History, he had given one remark that human progress from primitive time to the modern age is the theme of history. What is the subject matter of history? From very ancient time till the date, that is the subject of history. Not only individual advances from infancy to manhood, but the species itself from rudeness to civilization. A human being is born in the form of a baby. The baby then grows into infancy. From infancy one enters into adolescent phase, then to the phase of youth, then the matured phase. Gradually the man grow old and we die. So the life cycle, आमे जदि गोटे मनिषर जीवन चक्र को देखु, what we find out, छुआटीए जन्म हैला जोटा को आमे कहूचु जे बेबी बा शिशुटीए जन्म हैला, शिशुरु तापरे से प्रवेश करिब शैशव को, शैशवरी कैशोर, कैशोरु यौवन, यौवनरु आमे आसीबा गोटे परिपूर्णता, गोटे मैच्योर्ड एज, परिपक्व आमर चिंताधारा, तापर पर आसीबा आमर कोन ना मध्य बयस, तापर आसीबा आमर वृद्धावस्था, एवं वृद्धावस्था परे परे आमे आहुरी बुढ़ा होबु, then we will die. Exactly, a civilization can also be compared in that manner. So as the individual advances from infancy to manhood, the species itself from rudeness to civilization, the human being, its society, its corresponding environment, जो परिवेश जो प्रकृति मनुष्य भितर बढ़ुची, आस्ते आस्ते ता भितर मध्य मनुष्य तार मौलिकता टारू आस्ते आस्ते से परिपूर्णता पाउची एवं सिविलाइजेशन मध्य गोटे परिपूर्णता आसी. सिविलाइजेशन इज ए डायनामिक प्रोसेस. आमे जो सभ्यता कहूँ, सभ्यता केबे स्थिर नुह, यह नित्य चलमान एवं पृथ्वीर इफ वी फॉलो द पेजेस ऑफ हिस्ट्री वी फाइंड आउट दैट इट इज full of with the rise and growth, the continuity and fall of different civilizations. पृथ्वी बा विश्व इतिहासर पृष्ठा परिपूर्ण विभिन्न सभ्यता और संस्कृतिर उद्भव, यार विकास, प्रथम है उन्मेष, तापरे विकास, तापरे रहिला तमर कंटिन्यूटी बा प्रवहमानता, तापरे पर आसी जाए डिक्लाइन. दिस इज द लॉ ऑफ हिस्ट्री. You have read about Egyptian civilization, you will read about Mesopotamian civilization, you will read about Chinese civilization, Indian history रे पढ़िबा हरप्पान कल्चर, एगुड़ा सब है एनसिएंट सिविलाइजेशंस. एवं ऑल दिस सिविलाइजेशंस गोटे निर्दिष्ट समय से मानकर उन्मेष बा आविर्भाव घटी. ग्रेजुअली दे हैव बिकम मोर एंड मोर मैच्योर्ड. आस्ते आस्ते से मानकर ग्रोथ आसी, विकास आसी एवं तापरे से माने गोटे परिपूर्णता से मानक भितर आसी एवं ग्रेजुअली विथ द मार्च ऑफ टाइम
द सिविलाइजेशन हैव डिक्लाइंड। आमर गोटे अच्छी राधानाथ कही कौन ना बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबुड़ी जीव से आचम बीते आसी। ए काल है भारी क्रूर, से एते निष्ठुर जे काहाकू चिरदिन निज भितरे धरी रखे नहीं। महीमंडले देह बही देवता होइले मरई, से मनीष हो पारे, से सभ्यता संस्कृति हो पारे, केही चिरंतन नुह ए संसार रे। तेणु से परी मनीष परी मध्य सभ्यता संस्कृति से मानकर जन्म अच्छी, से मानकर विकास अच्छी, से मानकर सामग्रिक उन्नति अच्छी एवं से मानकर मध्य पतन अच्छी। आहुरी गोटे कथा आम एते गुड़िए सिविलाइजेशन पढ़ा, तमे ग्रीस और रोम मध्य पढ़ब जे हाउ देयर वाज द ग्रोथ ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमान सिविलाइजेशन, सबु प्राचीन पृथ्वीर विभिन्न महादेश रे विभिन्न प्रकार आमर अमेरिका रे माया, आजटेक, इंका सभ्यता सबु विभिन्न महादेश रे सबु सभ्यतार उद्भव घटी, किंतु कौन सी सभ्यता चिरंतन भाव रे से रही नहीं बा ए पर्यंत रही नहीं। कालर कराल गति रे से माने समस्ते विलीन हो जाइछंती। Another important thing, when we are going to discuss about the ancient civilization, the very fundamental thing we must know, गोटे अत्यंत मौलिक कथा हमर जानिबा दरकार जे एई सभ्यता गुड़िक तमर Egyptian civilization grew on the bank of the river Nile. Mesopotamian civilization will grow on the bank of two rivers, Tigris and Euphrates. Harappan culture will develop on the bank of the river Indus, while the Chinese civilization will grow on the bank of the river Yangtze and Huanghe. So, one thing common you find out, and what is that common thing? That all these civilizations, they have grown on the bank of the rivers. आमे प्राचीन पृथ्वीर जितेबाला सबु सभ्यता को देखुचु, सबु सभ्यता किंतु नदी कूल रे आरंभ होईची। What is the reason? The reason is this, that human being has got three basic necessity of life. आमर मनुष्यर बंचिबा पई तीनोटी मौलिक उपादान दरकार। What is that three basic necessities of life? Food, clothing and shelter. खाद्य, बास, खाद्य, फूड, क्लोथिंग, बास और आश्रय। आमर रहिबा पई जोटी खाद्य मिलिबो, आमको गोटे आश्रय माने बंचिबा पई खाद्य मिलिबो, रहिबा पई हमको बास मिलिबो एवं आमर वेश पोशाक हमको मिलिबो हम शरीर को आवृत्त करी रखिबा पई। And in ancient time, these three things you can very well obtain from the bank of the river. तमे नदी कूलरू एई तीनोटी जिनिष अति भल भावरे पाई परिबो। How? The fertility of the soil, the constant supply of water and the availability of house building materials. They helped the ancient ancestors, our ancient ancestors, to settle on the bank of the rivers. कौन है कथा ना नदी कूल जदि तमे रहिबो तमे पीबा पई पानी पाइल एवं नदी कूलर जो आमर सॉइलटा मृत्तिकाटा दैट इज वेरी वेरी फर्टाइल हेले इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तेणु कृषिटा तमे सेठी जदि आमे जमी चाष करि परिबा वी कैन गेट आवर फूड एंड क्लोथिंग, कारण आमे भी सेठी कपा चाष कले आमर से तुलारू भी लुगा आसीबो। तेणु ऑन द बैंक ऑफ द रिवर we can have our agriculture, we can get the house building materials. सेते बेले ता हमरो कोठा पिटा हो नथिला, हमरो दरकार हो नथिला तमरो पोड़ा इटा ये सब तो नहीं, हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स हमरो जो मड, वाटर, सैंड, बेम्बू ये जहाँ खोजिबो सब नदी कूल रे मिलुथिला। सो इट हेल्प्ड आवर एंशिएंट एंसेस्टर्स, हमरो जो पूर्वपुरुष माने थिले, जो प्राचीन आदिम पूर्वपुरुष माने थिले, से माने नदी कूल रे एई गुडिक पाउथिबारु इट हेल्प्ड देम टू सेटल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। प्रथम अवस्था रे मनुष्य थिला द नोमाडिक, दे वेर नोमाडिक ह्यूमन बीइंग्स, जाजाबर से माने थिले, किंतु कालक्रमे से माने देखिले जाजाबर बाय लीडिंग ए नोमाडिक लाइफ दे कुड नॉट सेटल एनीवेयर। जाजाबर कोठी जगह रे निजर स्थायी बसति स्थापन करि पारे नाही। In course of time they left their nomadic habit,
तांकर जाजाबर प्रकृति को से माने छाड़िले दे बिगेन टू सेटल डाउन परमानेंटली जेकोसी जगार आम रही आम परमानेंटली रही सो फ्रॉम दिस मेंटालिटी दे नाउ बिगेन फर्स्ट दे settled on the bank of the river Nile, and once they settled permanently they now started the Egyptian civilization. The next was your Mesopotamian civilization. So, the second civilization which grew in the ancient world, that is called as the Mesopotamian civilization. So, Mesopotamia is the place I will give you while discussing the geographical location, I will give you the greater details of the location of Mesopotamia. Mesopotamia is a word. It can be divided into two parts. It is derived from the Greek word Mesopotamus. Mesopotamus, two syllables. Mesos means intermediate, potamus means river. So, the Greek word Mesopotamus means intermediate river. So, what does it mean? The meaning is the intermediate means the land between what? Rivers. ताले नदी मध्यवर्ती अंचल रे जो बाली टापुरे कौन गोटे बड़ सभ्यता ग्रो करि परिबो नो land between two rivers. To give you a very good example of Cuttack, the city of Cuttack, it is situated in between two rivers. On one side there is Mahanadi and on the other side there is Kathajodi. Similarly, in Western Asia, Southeastern Asia, we find out the presence of two rivers, Tigris and Euphrates. So, the land between the rivers called Tigris and Euphrates, it was called in the name Mesopotamia. तेणु मेसोपोटामिया रो आक्षरिक अर्थ हैला नदी मध्यवर्ती अंचल. कौ नदी मध्यवर्ती अंचल ना टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी मध्यवर्ती अंचल को इन एंशिएंट टाइम वाज कॉल्ड एज मेसोपोटामिया. द जियोग्राफिकल लोकेशन, whenever you are going to read a history, the two things are very important, which is called as the two eyes of history. One is chronology, another is geography. इतिहास पढ़ा को हेले जार इतिहास पढ़ुच से भूगोलटा जानिबा दरकार से अंचलर एवं से क्रोनोलॉजी मीन्स समयर क्रमन्वयिता. आमे वर्तमान जेतेबेले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ुचु, व्हाट इज द टाइम? एंशिएंट टाइम ऑलमोस्ट 5000 BC बिफोर क्राइस्ट. वर्तमान है 2021 AD बा वर्तमान नुआ ये कहा कौन CE ख्रिस्टियन एरा BCE बिफोर ख्रिस्टियन एरा. आम जोटा को BC कहूँ वर्तमान नुआ स्टाइल रे कह जाउची. तबे तुम मान बुझापी मुझे BC आउ AD कहूँ एनो डोमिनी. कौन है व्हाट इज द लोकेशन? से जो मेसोपोटामिया जगटा केमिति ना फर्टाइल क्रिसेंट और सेमी सर्कुलर एरिया extending from mouth of Tigris and Euphrates to Syria and Asia Minor in northwest. आमे जो देखुचु एटा तमे देख एंशिएंट मेसोपोटामिया तुमको देखई एटा गोटे सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकृति ताको कह जाए फर्टाइल क्रिसेंट. से एरियाटा एते क्रिसेंट माने कौन आम जो द्वितीय जन्हपुणी टाइप्र सेटा है क्रिसेंट. तेणु से टाइप्र गोटे फर्टाइल उर्वर अर्धचंद्राकृति बा अर्धगोलाकृति आमर जोटा कौचे से प्रकार एरियाटा है तुमर बेबिलोनिया. एवं कौन है ना तार कौठू तार विस्तृति फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स टू सीरिया एंड एशिया माइनर इन द नॉर्थ वेस्ट. तेणु सीरिया और एशिया माइनर उत्तर पश्चिम जोटा अच्छी एशियार सेते पर्यंत तार विस्तृति थिला. बाउंडेड बाय पर्सिया इन द ईस्ट. एहार पूर्व भागरे व्हाट वाज द सिचुएशन? देयर वाज द सिचुएशन ऑफ पर्सिया. पिला माने वर्तमान मैप रे किंतु पर्सिया बोली कौनसी राज्य नहीं. तमे जेतेबेले एशियार पश्चिम एशियार मैप देखिबो सेतरे किंतु पर्सिया बोली कौनसी राज्य नहीं. एंशिएंट पर्सिया इट करेस्पॉन्ड्स टू मॉडर्न ईरान.
तेणु बर्तमान आम जो ईरान देशटा देखुचु इन एंशिएंट टाइम इट वाज नोन इन द नेम पर्सिया। सीरियन डेजर्ट इन द वेस्ट यही जो सेमी सर्कुलर अर्धवृत्ताकार जो अंचलटी मेसोपोटामिया तार पश्चिम रे थिला सीरियन डेजर्ट बा सीरियार मरुभूमि। द आर्मेनियन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ यार उत्तर रे थिला आर्मेनियन पर्वतमाला एंड अरबियन डेजर्ट इन साउथ दक्षिण रे रहिथिला अरबीय मरुभूमि। तेणु आमे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रे तमे कोण में देखुछ ना बाउंडेड बाय पर्सिया सीरियन डेजर्ट माउंटेन रेंज अरबियन डेजर्ट कौन है हाँ न ये जो अंचल गुड़ा आम देखिलु ये टोटाल टाक नहीं कह जाउथला मेसोपोटामिया एवं यही मेसोपोटामिया द नॉर्दर्न साइड ऑफ मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड एज एसीरिया। द सदर्न साइड ऑफ मेसोपोटामिया इज कॉल्ड एज बेबीलोन। मु पुणी तुमको मैपटा देखौछि देख नॉर्दर्न साइड टाक कह जाउथला एसीरिया सदर्न साइड टाक कह जाउथला बेबीलोनिया फर्दर साउथ को आसिले सुमेर। So the land of Mesopotamia was divided into three parts. ए देखो the fertile crescent Mesopotamia এই जो तमर देख फर्टाइल क्रिसेंट लिखा एवं तार लिखा बाउंडेड बाय पर्सिया इन ईस्ट सीरियन डेजर्ट इन द वेस्ट आर्मेनियन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड अरबियन डेजर्ट इन द साउथ। तमें देख काइंडली बी एक्वेंटेड विथ द मैप एसीरिया आकड़ बेबीलोनिया सुमेर यही सब अंचल गुड़ा तुम्हें देख एवं एशिया माइनर देखिल मेडिटरेनियन सी मीन्स भूमध्य सागर ऊपर ये अंचलटा है एशिया माइनर। सो डियर स्टूडेंट्स बी एक्वेंटेड विथ द मैप एवं एठारु तमें देख जे द सेकेंड एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इट ग्रू एट मेसोपोटामिया। ये जो आसिला प्रथम बेबीलोन बेबीलोन द सदर्न साइड इन सुमेर द नॉर्दर्न साइड इज कॉल्ड आकड़ गोटे है सुमेर गोटे है आकड़। द प्रेजेंट मैप बर्तमान जदि आम प्रेजेंट मैप टाकू देखिबा आमर 21st सेंचुरी मैप we find out that the extension of territory in Mesopotamian civilization was from Persian Gulf to Amara on the bank of Tigris and the borders area of Iraq in the east, and all these areas are now in modern Iraq. And as you know that this is an area of scanty rainfall, but even if it is an area of scanty rainfall it बेसी वर्षा हुए नहीं, but the presence of Tigris and Euphrates river नदी जोठी रहिबो निश्चय माटी सेठी उर्वरा हबो। So the presence of Tigris and Euphrates, the rivers, two rivers, has made it a very fertile zone. Kintu one problem was there. What is that problem? The problem is this, that we do not find out any compact surrounding. मेसोपोटामिया जो अर्धचंद्राकृति आम अंचलटी देखुचु तार जो सीमांतरे कौनसी गोटे कॉम्पैक्ट सराउंडिंग माने गोटे प्राचीर पुणी गोटे प्राकृतिक प्राचीर नथिला। प्राकृतिक प्राचीर बोइले आम कौन बुझू, धर भारत भारतर चारि पाखरे देख प्राकृतिक प्राचीर अच्छी, तीन पाखरे अच्छी आमर 3 सी, पूर्व है बंगोपसागर, पश्चिम है अरब सागर एवं दक्षिण है भारत महासागर एवं तमर जो उत्तर रे रोहुची हिमालय एवं से समय वर्तमान सिना आम बहुत अत्याधुनिक हो गलुणी, बट इन एंशिएंट टाइम से समय जो अलेक्जेंडर आइले तुम कह तुम से तो थिले हिमालय थिला, फिर से आसिले कौ बाटे से उत्तर पश्चिम बाटे, कारण भारतर विस्तृति थिला कौटी अफगानिस्तान पर्यंत। वर्तमान जो तालिबान कथा तुम मैंने पढ़ुच सेते पर्यंत भारतर विस्तृति थिला। आमर जो कलिंग युद्ध अशोक करथिले तांकर जो एडिक्ट जो युद्ध रु आमे जानि पारु आमर कलिंग युद्ध कथा सेटा कोठो बाहरची शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी वर्तमान कौन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर शाहबाजगढ़ी एडिक्ट रे लिखाई कलिंग युद्ध कथा। तमें मत पचारि पार तांको कौन आउ मिलानी कौन सी जगह से लिखुले, कारण से बाट देकी शत्रु माने पोषुले, से बाट दे जो शत्रु माने पोषुले ताले एमिति गोटे आम जदि इनस्क्रिप्शन रे लिखिकी रखू सो दैट इट विल क्रिएट टेरर इन द माइंड ऑफ द एनिमीज। जो एनिमी माने आसुथिबे पढ़िबे गोटे एते बड़ राजा अछंती एते बड़ युद्ध करथिले
आहरी गोटे कथा मु तुमको कहे कारण वर्तमान अफगानिस्तान आमर बहुत न्यूज रे अच्छी फॉर दिस तालिबान्स एवं सेठी आमे जो पढ़ुचु गांधार देश गांधारी से गांधार देश कौटी अफगानिस्तान रे कंधर तार वर्तमान ना कौन कंधर तेणु वर्तमान कंधर मॉडर्न कंधर इट करेस्पॉन्ड्स टू एंशिएंट गांधार तेणु मोर एठी कहवा कथा से सब न जाई मेसोपोटामिया कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वी फाइंड आउट नो कॉम्पैक्ट नेचुरल सराउंडिंग समुद्र बा पर्वत बा नदी एई टाइप रो किछि नथिला तेणु जेहेतु गोटे प्राकृतिक बैरियर बा प्राचीर नथिला तेणु जीए पारि सी सेठी पशि पारुथिले सभ्यतारे सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेचुरल कॉम्पैक्ट सराउंडिंग ओपन माइग्रेशन when you will read about the political history of Mesopotamia you will find out that it was an area where the different tribes at different phases at different periods they have entered जेतेबेले जार सुविधा हला से माने पसी जाउथिले कारण समुद्र थिले हुए तो तुमको गोटे बाधा पड़िबो तमर पर्वत थिले बाधा पड़िबो जेहेतु सेगुडा नथिला नेचुरली इट नाउ वाज इजियर ऑन द पार्ट ऑफ द माइग्रेंट्स टू एंटर एवं आसिक जो माने रहउथिले तांको संगे युद्ध एवं तांको संगे युद्ध करिबा परे से माने कोन करथिले ना तांको संगे युद्ध करिकि तांको परास्त कर देबे परास्त करके जी सब बलशाली है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से से माने पुणी बलशाली जाति से माने राजत्व करथिले So we find out that this was a place of conflict between Indo-European and the Semitic tribes of desert. तेणु तमें जेहेतु एटा यूरोप एशिया महादेशर सीमा रेखारे बा सीमांत अंचल अवस्थित बॉर्डर अंचल से पाकटाल आहरी पश्चिम को गले यूरोप तेणु इंडो यूरोपीय जाति एवं ये जो मरुभूमि रे रहउतवा विभिन्न प्रकार सेमिटिक जाति भितरे सबु समय रे द्वंद्व उपजुथिला व्हाई because किए से who will defeat whom x will defeat y or y will defeat x Semitic tribe will defeat Indo-Europeans or Indo-Europeans will defeat Semitic tribes जी जहाँ को परास्त कला तापर से माने राजत्व करथिले एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग से आमे कौन देखुचु ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज होमोजेनस इन कैरेक्टर व्हाइल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज हेट्रोजेनस बाय नेचर तेणु Egyptian civilization को if we analyze bit by bit we find out it is homogeneous यार प्रकृति थिला केवल तमर कहा द्वारा सेटा अध्युषित थिला इजिप्शियन मानक द्वारा इट वाज एक्सक्लूसिवली बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट होमोजेनस माने गोटिए भाग माने तार हेट्रोजेनस हेले विविध डिविजन बट मेसोपोटामिया इज हेट्रोजेनस विभिन्न समय रे विभिन्न जाति आसुचंती से माने युद्ध करूचंती जय करिकि सभ्यता विस्तार करचंती यू इटसेल्फ नो दैट जे मेसोपोटामिया कंसिस्ट्स ऑफ 3 सिविलाइजेशंस तम कोर्स रे भी अछि सुमेरियन सिविलाइजेशन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन एसीरियन सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द सुमेरियंस बेबीलोनियन बाय द Amorites and Assyrian civilization by the Assyrians. तेणु तमे माने देख जे Egyptian civilization was a homogeneous unit. It was exclusively established by the people of Egypt, while in case of Mesopotamian civilization we find out the presence of different tribes who by virtue of establishing victory they now had their own civilization. Now I must give you a brief history of Mesopotamia. Around 5000 BC, the first civilization in Mesopotamia was started by the Sumerians in 5000 BC and the civilization is known as Sumerian civilization. And then these Sumerians, they were replaced by the Akkadians. तांको परे परे आसिले आउ गोटे जाति हु वर कॉल्ड एज अकाडियंस एवं सेई फेस्टा को कहा जाए सुमेरियन सुमेर अकाडियन सिविलाइजेशन देन केम एमोराइट्स अकाडियन मानक परास्त करी आसिले एमोराइट्स हु नाउ एस्टैब्लिश्ड देयर
center of civilization at Babylonia. I will tell you while discussing the Babylonian civilization. The Amorites were defeated by the Hittites and Kassites. ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଉପଜାତିର ଲୋକ ଆସିଲେ, the Hittites and the Kassites. They for some time they ruled and then they were replaced by the Assyrians. ତେଣୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସିରିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା. It is called as the Assyrian civilization. Then came the Medes and Chaldeans. ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ନାମ. The Medes and the Chaldeans, they also had their civilization for some time on the fertile area of Mesopotamia. And by 539 BC, the mighty Persian emperor Cyrus occupied the Chaldean empire. Chaldean माने जेतेबेले राजत्व करथिले से समय जो मु कहिछि पर्सिया थिला. Persia was a very powerful empire in ancient time, and sei Persian रे जे राजा थिले the emperor Cyrus, he now defeated the Chaldean empire, the ruler of the Chaldean empire in Mesopotamia in 539 BC, and Mesopotamia ultimately came under the control of the Persian ruler. ତେଣୁ 5000 BC ରୁ 539 BC, this long span of time, we find out the presence of different tribes and their civilizations, out of which in your course there is the three civilization, the Sumerian civilization, the Babylonian civilization, and the Assyrian civilization. So till now, whatever I told you, this is the background of the growth of Mesopotamian civilization. So Mesopotamian civilization, how it developed and what was the tenure of the civilization, how it was marked by the presence of different civilizations, that was our point of discussion. Now let us be more precise and we shall focus our attention on the Sumerian civilization. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୁମେରୀୟ ସଭ୍ୟତା. ତେଣୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା, it includes ତା ଭିତରେ ତିନୋଟି ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ସୁମେରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ବେବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଏସିରୀୟ ସଭ୍ୟତା. In the year 1927 and 28, the Sumerian civilization came to limelight. सुमेरियन सिविलाइजेशन को विश्ववासी केबे जानिले ना 1927-28 रे. 20th century is a very important century, कारण आमर जो तमे पढ़िबो भारत इतिहास रे हरप्पा संस्कृति को केबे आविष्कार करा गला 1920-21 सेही समय रे. by that time the Director General of Archaeological Survey of India was Sir John Marshall, एवं सेही समय सिंधु सभ्यता बा आमे वर्तमान जोटा कहूँ हरप्पा संस्कृति एटा लोकलोचन को आसीथिला. तमर इजिप्शियन सिविलाइजेशन केमिति आसिला तमे तो पढ़ी सारिछ. इजिप्शियन सिविलाइजेशन केम इनटू लाइमलाइट इन 1799-1800, प्राय 100 वर्ष पूर्वरु. केमिति आसिला ना, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट. Napoleon, who was the French emperor, Napoleon, he now had his conquest of Egypt. सेठू से पाइथिले रोजेटा स्टोन, जोटा कि वर्तमान ब्रिटिश म्यूजियम रे प्रिजर्व हे अछि. सेही रोजेटा स्टोन रो पाठोद्धार करी द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट द ग्रेट ग्लोरियस इजिप्शियन सिविलाइजेशन. तेणु से रोजेटा स्टोन इट नाउ प्रोवाइडेड अस इनफॉरमेशन अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन. सेमिति आमर जो 1927 आउ 28 रे आमे माने देखुछु कोन ना, दिस सिविलाइजेशन, द रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन केम टू लाइमलाइट. कोन कोन रिमेन्स? द सिटी स्टेट्स लाइक उर, उरुक, लागास, निपुर, किस, एरिडू, एगेट, निसिन, यही सब अंचल गुड़िक बर्तमान मध्य अंचल गुड़िक अच्छी. द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वर एक्सकावेटेड फ्रॉम दीज एरियाज एंड दे हैड देयर ओन रेस्पेक्टिव रूलर्स. ये जो अंचल गुड़िक जो रेस्पेक्टिव रूलर्स वर देयर, दे वर कॉल्ड एज पटेशी.
they were called as potaci in their language. They acted as independent units. So, in Sumerian civilization we find out the presence of a number of city states like Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kis, Eridu, Eged, Nisin, etc. And they had their rulers. आमे जेमती राजा कहूचु बा किंग कहूचु, they used to call their rulers as potaci. And you must remember जे गोटिए घर जेतेबेले रुहे आम परस्पर भितर स्नेह ममता जा थाए, घरटा जेतेबेले भांगी जाए, जेतेबेले एटा विभिन्न खंड विखंडित हो जाए, आम भितर शत्रुता, द्वंद्व, हिंसा, द्वेष एटा बेसी बढ़ी जाए. सेमिति गोटिए सिविलाइजेशन भितर एते गुड़िए अंचल रे एते गुड़िए राजा जेतेबेले थिले बा पटेसी जेतेबेले थिले, म्यूचुअल जेलसी, परस्पर हिंसा, राइवलरी, शत्रुता, फ्रीक्वेंट conflicts were their characteristics. So, the presence of a number of city states with respective potacies had its repercussion like jealousy, rivalry, conflict, quarrel, enmity among themselves. परस्पर भितर गोटे भल भाव न रही सबु पटेसी मानक भितर रहुतला कौन ना गोटे असत भाव, शत्रुता, द्वंद्व ए प्रकार मनोवृत्ति रहुतला. ए प्रकार मनोवृत्ति यदि राजा राजा बा पटेसी पटेसी मानक भितर रहिबो, what will happen? राजनैतिक भाव रे all these city states were very weak and unstable. से माने सबु कौन थिले? All these city states we find out that they were very weak. तेणु पारस्परिक हिंसा, द्वेष, शत्रुतारू ए जो सिटी स्टेट गुड़िक उर, उरुक, लागास से माने सब कौन थिले ना भारी दुर्बल सिटी स्टेट थिले. अब एटा गला पॉलिटिकली. तेणु तमे पॉलिटिकल हिस्ट्री रे देखुछ कौन ना द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ सिटी स्टेट्स एंड द रूलर ऑफ दीज सिटी स्टेट्स दे वेर भेरी भेरी वीक. तापरे कौन हैला ना सोशियली आमे यदि if we look at the social condition of the people in Sumerian civilization, we find out threefold strata of the society. सामाजिक क्षेत्र रे तीनोटी स्तर थिला. The upper strata, the middle strata, the lower strata. एवं ए जो तीनोटी strata they passed through three periods. Sumerian civilization रा समय काल हला 500 BC to 2900 BC, and the period is divided into three phases: the Ubed period, Uruk period, Jamdat Nasar period. कौन हैला? The Uber period, it was from 5000 to 4000 before Christ. So, the first 1000 years in the Sumerian civilization, it is called the Ubed period because Ubed was the center. And what was the main characteristic of this period? Agriculture, hunting, fishing, cattle rearing. So, the main occupation of the people was agriculture, कृषि, शिकार, माछ धरिबा और पशुपालन. तेणु लोक मानकर जीविका when we make an assessment of the total standard of the people, economic standard, we find out their economic activities centered around agriculture, hunting, fishing and cattle rearing. And we find out the evolution of a rural culture. एवं ए समय रे ए पीरियड रे फ्रॉम 5000 BC टू 4000 BC गोटे ग्राम्य संस्कृतिर उन्मेष घटिथिला उबेद रे, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड द उबेद पीरियड. द नेक्स्ट वाज फ्रॉम 4000 BC to 3100 BC 900 वर्ष, इट इज कॉल्ड उरुक पीरियड. ए समय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड from Ubed to Uruk. कौन हैला ई पीरियड रे? The important feature of this period was marked by population growth, expansion of civilization, presence of craftsmen, traders, bureaucrats, mercantile class. कौन हैला ना ए समय रे there was the excessive growth of population.
when there is the growth of a population, naturally there will be the expansion of the civilization. जनसंख्या वृद्धि घटिले सभ्यतार विस्तृति घटिबो. आगरु अल्प लोकरे गोटे छोट जगह भितरे रहउथिले. With population explosion, naturally there will be the expansion of the area. एवं कौन कौन आसिले आगरु थिला हमर कौन ना कृषि कैंद्रिक जीवन धारण कृषि पशुपालन शिकार यार भितरे दे वेर कन्फाइंड. किंतु वर्तमान तमर आसी जाउची कौन ना आर्ट एंड क्राफ्ट. वर्तमान प्रजुक्ति आसी जाउची द प्रेजेंस ऑफ क्राफ्ट्समैन. वर्तमान आमे माने देखुछु कौन ना ए जो प्रजुक्तिर उन्नति विभिन्न प्रकार लोक वाणिज्य व्यवसाय लोक ब्यूरोक्रेट माने जो माने शासन रे अंश ग्रहण करती मर्केंटाइल क्लास बणिक क्लास. तेणु विभिन्न प्रकार तमर क्राफ्ट्समैन रो ओडिया मु कौन कहिबी तुमको क्राफ्ट्समैन ओडिया को आम यही भाव में कहीपर जो पटर ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ ये मैंने है क्राफ्ट्समैन जोटा तमर गोष्ठी ये गोष्ठी क्राफ्ट्समैन गोष्ठी तापर आसूची कौन ना ट्रेडर ब्यूरोक्रेट मर्केंटाइल क्लास. सो with the growth of civilization, with the growth of population, we find out that there was the gradual expansion of civilization. वर्तमान वाणिज्य व्यवसाय आसूची वर्तमान आमर गोटे देखुछु कोन निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार गोष्ठी आसुचंती जो माने कि से मानकर क्राफ्ट द्वारा प्रजुक्ति द्वारा से माने तमर कमार हेई पारंती तमर पटर हेई पारंती कुंभार हेई पारंती ए सब आसीबा द्वारा वर्तमान सिविलाइजेशन रो ग्रोथ होची वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल रेगुलेटेड सोसाइटी. तेणु सोसाइटीटा वर्तमान कौन होची ना इट वाज वेरी मच वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल रेगुलेटेड. सो फ्रॉम रूरल सोसाइटी उबेद पीरियड रे थिला रूरल संस्कृति किंतु वर्तमान आसुची कौन सुसंगठित और सुनियंत्रित समाज तामाने आहुरी ग्रोथ होची. द थर्ड पीरियड वाज अनदर 800 years 3100 BC to 2900 BC एवं एटा हला जामदत नासर पीरियड. सो अगेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट शिफ्टेड to Uruk to Jamdat Nasar. It is the name of a place, and the short period is marked by writing and seal carving. We find out that though the period is short, but it is marked with high intellectual activities. And what is that intellectual activity? The system of writing. I told you previously that system of writing is the most important characteristic that differentiates a prehistoric phase from a post-historic, proto-historic phase. तेणु आमे प्राचीन प्रस्तर युग को आम एत कौन करुचु ना से समय लेखन प्रणाली थिला जो आम से समयटा को कहूँ प्राक ऐतिहासिक युग. किंतु लेखन प्रणाली जितेबाला आसीगला आमर जितेबाला विभिन्न प्रकार स्क्रिप्ट अक्षर आसूची तमर इजिप्शियन सिविलाइजेशन रे हाइरोग्राफी तमर सुमेरियन सिविलाइजेशन रे आम पढ़ा क्यूनिफॉर्म राइटिंग तमर चाइनीज सिविलाइजेशन रे हम पिक्टोरियल पिक्टोग्राम फोनोग्राम आइडियोग्राम एटा हला चाइनीज फॉर्म ऑफ राइटिंग एवं Indus Valley civilization by Harappan culture in India, you will find out the writings on the Indus skill. So it speaks of their intellectual growth. So writing and seal carving ए जो आमर सील मोहर सब बाहरी माटी रे होगी पोड़ा से जो विभिन्न प्रकार छवि तापरे जो खोदेई होती. सो जामदत नासर पीरियड इज मार्क्ड विथ दिस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड द यूज ऑफ हाई क्वालिटी वेपन्स. So we find out the use of high quality weapons during this period. So when we are going to discuss about the Sumerian civilization, we discussed about the growth of city states, the presence of potesy in their political life. In the social life, we find out the three different divisions of the society, the upper class, the middle class, the lower class, and that entire period from 5000 BC to 2900 BC, what is the period for Sumerian civilization can be divided under three headings: Ubed period, Uruk period, Jamdat Nasar period, with their own respective characteristics. Now let us come to the
First important aspect, the economic life. We have discussed about their economic life. Just I had given you hints while discussing about the 3 periods. Agriculture was the backbone of the economy. So, the backbone of their economy as the human being stands straight, ମୁଁ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି କେମିତି ସିଧା ଠିଆ ହେଇଛି, it is for my backbone, मेरुदंड ପାଇଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସଭ୍ୟତାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା କୃଷି। କ'ଣ ସେମାନେ କୃଷି କରୁଥିଲେ, ତମେ ସେ ଏରିଆଟାକୁ ମୁଁ କହିଛି ସ୍କାଣ୍ଟି ରେନଫଲ୍ କିନ୍ତୁ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ବେଲ୍ଟ ଫର୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଫ୍ରେଟ୍ସ, ହ୍ୱିଟ୍, ବାର୍ଲି, ଡେଟ୍ ପାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍। ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ବର୍ଷେ କାହିଁକି ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧାନଟା ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ବର୍ଷାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାନ ହୁଏ, ଧାନଟା ହେଲା ହେଭି ରେନଫଲ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଟ୍, ବାର୍ଲି, ଡେଟ୍ ପାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। କ୍ୟାଟଲ୍ ରିୟରିଂ, ପଶୁପାଳନ। So, in ancient civilizations you find out cattle rearing occupies a very important position. ପଶୁ ପାଳନ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଗାଈ ଗବାଦି ପଶୁ, ଗାଈ, ମହିଷି, ଛେଳି, ଘୁଷୁରୀ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଢା ତମେ ସବୁ ଯେଟା ସବୁକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଏ ଗବାଦି ପଶୁରେ। ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ପଢ଼ିବ ଦେଖିବ ଯେ ଯାହାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଟଲ୍, ସବୁଟା ହେଲା କ୍ୟାଟଲ୍ ରିୟରିଂ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହାର ଯେତେ ଅଛି ସେ ସେତେ ଧନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, କାହାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେଇ ଆମର ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ମେଟେରିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ କ୍ୟାଟଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ସେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦିସ୍, that they were the inventor of wheels. ତମେ ମୋତେ ପଚାରିପାର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଚକଟାକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ଏଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନା ଚକର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଚକ ଆବିଷ୍କାରରେ ଚକ ମାନେ ଗତି, ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚକ ହେଇପାରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଚକ ହେଇପାରେ, ତମର ରଥ ଚକ ହେଇପାରେ, ଯାହା ହୁଅ ଚକ ମାନେ ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଟ୍ କଲେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଆନାଦର। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯେ ସମୟରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚକ, ଦେ ନାଓ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ରେ କ'ଣ ଆସିଯାଉଛି, ଦ ସୁମେରିଆନ୍ସ ୱେର୍ ସ୍କିଲ୍ଡ, ୱେର୍ ଭେରି ସ୍କିଲ୍ଡ। ଯେଉଁ ସୁମେରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କୁଶଳୀ କାରିଗର, କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇଖିନି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର, କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କାରିଗରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁମେରରେ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଥିଲେ, କେଉଁ କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁ କହିଲି କୁମ୍ଭାର, କମାର, ବଣିଆ, ତେଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାରିଗରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ ଥିଲେ, ଦେ ୱେର୍ ଭେରି ସ୍କିଲ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେ କୁଶଳୀ ସେମାନେ ଥିଲେ, କୁଶଳୀ କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀ। ସୋ ଫାର୍ ଏଜ୍ ଦ କଲଚରାଲ contribution is concerned, the first writing of Sumerian civilization was discovered by Henry Rawlinson. ତେଣୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହେନରୀ ରଲିନ୍ସନ୍ ରକ୍ ଅଫ୍ ବେହିସ୍ତାନ, ବେହିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଅଛି ତମର ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କିଛି ଲେଖନୀ ପାଇଥିଲେ, କିଛି ଲେଖା ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ, କେମିତି ତୁମେ କହିବ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। ଅଶୋକ ଆଫ୍ଟର କଙ୍କରିଂ କଳିଙ୍ଗ ସେ ଦୁଇଟା ଅନୁଶାସନ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧଉଳି ଏଡିକ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୌଗଡ଼ ଏଡିକ୍ଟ। ଧଉଳି ଏଡିକ୍ଟଟା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେଇଠି ପର୍ବତ ଦେହରେ ଖୋଦେଇ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ କଟା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ଜୌଗଡ଼ଟା କେଉଁଠି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯଦି ଯାଅ ତୁମେ ସେଠି ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ଖୋଦେଇ ହେଇକି ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେମିତି କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ଶାସନ କରିବ, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୌଗଡ଼ ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ। ସୋ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ
आमे प्रथम देखुचु दि रॉक ऑफ बेहिस्तान व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी रॉलिन्सन से थ्रू आमे माने देखुचु कोन ना आसिला आर्ट ऑफ राइटिंग कौन से राइटिंग एंड दिस राइटिंग वाज ऑफ ए पिकुलियर शेप एई तांकर जो लेखन प्रणाली को कौन कहा जाए द क्यूनिफॉर्म राइटिंग it is called so called because the word cuneiform has come from the Latin word cunus कहीं कि आमे ताको कहूचु क्यूनिफॉर्म राइटिंग ना लाटिन वर्ड क्यूनस रसी क्यूनस माने ओज वेज वेज से लाइक राइटिंग एमती मुनिया किलक लिपि मुनिया मुनिया करिकी लेखती धर आम ओडिया अक्षरटा आमर कौन आम ओडिया अक्षर गुड़ा गोल गोल बुझिला आम अक्षरटा साधारण भाव में आमर सब अक्षर गोल सेमिति तांकर जो साधारण अक्षर थिला से अक्षर गुड़ा से लिपि जोटा आमे कहूचु किलक लिपि तेणु एमती किलापुणी मुनिया 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 हेइथिला बोली इट इज कॉल्ड एज क्यूनिफॉर्म राइटिंग तापरे आसीबा तांकर कोन ना इट इज देयर रिलीजियन we also get some very good idea about the religious belief of the people of Sumerian civilization. Polytheist by nature, they believed in polytheism means the worship of many gods and goddesses. ସେମାନେ ବହୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ earth, wind, sky, flood were attached with divinity. तेणु पृथ्वी वायु आकाश बन्या ए सब जो प्राकृतिक परिप्रकाश को से माने तापरे देवत्व आरोप करथिले एवं ता सहित कोन थिला न नेचर वर्शिप द वर्शिप ऑफ नेचर प्रकृति पूजा I can give you the name of different gods and goddesses worshipped by the people of Sumerian civilization. The sky god was worshipped as Onu. The goddess of sand and wind was worshipped as Enlil. Then Ishtar, the goddess of love and plenty. Ea, the god of water and ocean. And then we find out to worship all these gods and goddesses, they now built temples. से माने जो कहा को करुथिले for the first time they now created the temples what is known as ziggurat. So for the worship of these gods and goddesses, the temples they created was known as tower temples or ziggurat. खूब उच्च उच्च टावर पुनी टेम्पल करथिले जोटा को कहा जाउथिला ziggurat एवं we find out the presence of a very powerful priestly class गोटे भारी शक्तिशाली पुरोहित गोष्ठींकर आविर्भाव हेइथिला जो माने कि एई टावर टेम्पल भितरे रहुथिले एवं देवतांकर आराधना करुथिले they had no faith in rebirth तेणु तांकर पुनर्जन्म रे विश्वास नथिला किंतु से माने गोटे बहुत बड़ जिंस करथिले क्रिएशन ऑफ ए रिच माइथोलॉजिकल लिटरेचर से माने कौन करथिले ना गोटे भारी रिच माइथोलॉजिकल लिटरेचर गोटे पौराणिक साहित्य एई सब देवादेवी को नेकी जो पौराणिक साहित्य से माने रचना करथिले सेई गुडा मध्य सेई समय रे आमे देखिबा को पाऊ तांकर जेतेबेले when we look at their art and architecture we find out the use of burnt bricks not stones. One of the fundamental feature of their art and architecture is the use of burnt bricks. पोड़ा इटा व्यवहार करुथिले they were not using stones for arches, vaults and domes. विभिन्न प्रकार आर्च और vault पाई और डोम पाई they were using burnt bricks. The walled cities तांकर जो सिटी थिला सेटा थिला प्राचीर आच्छादित सिटी पिला माने आमे कमिंग क्लास रु आमे वर्तमान देखिबा हमर समय हेई आसिलानी आमे पुणी आर्ट एंड आर्किटेक्चर रु आरंभ करिबा आउ सुमेरियन सिविलाइजेशन र विशेष अल्प रहिला तापरे वी विल डिस्कस अबाउट द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन किंतु पिला माने एई जो पोर्शनटा मु तुमको पढेइली द बैकग्राउंड ऑफ एनी सिविलाइजेशन कहीं की गोटे सिविलाइजेशन रो कहीं की नदी कूल रे उन्नति हुए नदी कूल रे गढ़ी उठे कौन कौन यार फीचर मु तुमको पृष्ठभूमि कहली से अनुसार प्रस्तुत हब एवं तुमर जो
मल्टीपल चॉइस अच्छी कारण गोटे सिविलाइजेशन बा सबू सिविलाइजेशन को तुम अनलेस एंड अंटिल यू गो थ्रू इट ताहले तुम भविष्य में से नंकर परवर्ती इतिहासटा बुझीपार आज एतिकी तुम माने जहाँ रहिला आज घरे जाइकी बही देख तुम आज मन रहीज आउ पुणी तुमको पर क्लास रे देखा मु आरंभ करी सुमेरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द सेकंड फेज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दैट इज योर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. थैंक यू ऑल.